Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to solve a lead code problem number 1975. Okay. So let's read the problem statement. Maximum matrix sum. Okay. So problem is you are given an n cross n integer matrix. You can do the following operation any number of times. Okay. Choose any two adjacent elements of matrix and multiply each of them by -1. Okay, means you have to select the adjacent elements, means like this. uh, One element is here and another element is here, so these elements are adjacent element. Okay, so we have to select them and multiply by -1. Okay, two elements are considered adjacent if and only if they share a border means like this line. Okay, your goal is to maximize the summation of the matrix elements. Return the maximum sum of the matrix elements using the operation mentioned above. Okay, so we have to uh, operate this operation any number of times and return the maximum sum. Okay, so this is the target for this problem. Okay, let's move to the इनपुट. ओके मीन्स टेस्ट केसेस पे हम देखते हैं कैसे टेस्ट केसेस कैसे मतलब सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम. तो हम एक बार एग्जाम्पल टेस्ट कैसे समझते हैं. सो दिस इज़ द ग्रिड विच इज़ गिवन इन दिस एग्जाम्पल. ओके, so here are this negative number and this negative number. So we have to select the adjacent element. Okay, adjacent elements like this adjacent element, like this is also an adjacent element, this will also an adjacent element. Okay, so we have to select and multiply by -1. Okay, so firstly what we do, we select this adjacent element and multiply by -1. So the element the grid will look like this. Okay, now -1 is on this numbers. Okay, so now we select these are adjacent elements and multiply by -1. Okay, now the grid becomes this, and now we sum the grid. Find the summation of grid will like 4. Okay, now summation of grid is 4 and initially the summation of grid is 0. Okay, so now we got the maximum summation. Okay, maximum sum. Okay, this is the answer, because from now here we cannot find more than 4. Okay, this is the answer. Now look for this problem. Okay, this example test case. Now here the grid is 3 cross 3 and we have these numbers. Okay, so here what we do, we select this adjacent element and multiply by -2 and -3. Okay, now grid becomes this. Okay, so look here, this -1 cannot be positive, this -1 cannot become positive. Why? When we select like this adjacent element, we do this, we can do this as positive, but this becomes negative, so we cannot make positive. Okay, and if we select these adjacent element, it will also it becomes positive, but it makes this negative. Okay, so we cannot make this as a positive number. So the answer becomes 16 after making these adjacent element as positive. Okay, so maximum sum becomes 16. Okay, from the 16 we cannot go above. Okay, so this is the answer for this test case. Okay, now let's move on the approach. Okay, what the approach we can apply here. Okay, so the approach is by understanding these two condition. Okay, firstly we will look here on these two condition. After that we can understand the problem, that how can we solve that. Okay, so let's look here. Firstly, this is the example. Let's take this example. Okay, I'll take this example. Okay, here 2 and -3, 1 and 4. Here only one negative number. So our target is to maximize the sum. We have to what we have to do, maximize the sum.
we have to find the maximum sum. Okay, so for maximum sum, what we can do, we can propagate this negative number, we can propagate this negative number to the smallest number, to the minimum number, so that we can get the maximum number, sorry, maximum sum. Okay, I hope you got the my point. Okay, what I am saying, मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, what I am trying to say, if we propagate this negative number on the smallest number in this grid. Okay, इस ग्रिड में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस पर अगर हम ये निगेटिव नंबर को प्रोपगेट कर दें तो हमको क्या मैक्सिमम मिल जाएगा. अभी करेंटली मेरा सम क्या है, अभी करेंटली मेरा सम क्या है, सम जो है देखिए 2 + 1 is 3 and 3 + 4 is 7 and 7 - 3 is 4. Okay, currently sum मेरा 4 है, but if I propagate this minus number to this smallest number, that is 1 is the smallest number in whole grid. Okay, so we will propagate this here. How we will propagate this minus number here, using the adjacent, like if we operate the operation here. Okay, we will select these adjacent elements, so -1 will propagate from here to here. Now we will select these to adjacent number. Now this -1 propagate from here to there. Okay, so now -1 is now on the smallest number, so now we find the small sum. Now after applying the operation, we will find the sum. Now sum becomes 2 + 3 is 5 and 5 + 4 is 9 and 9 - 1 is 8. Okay, so now this is the maximized sum we get after the applying operation. Okay, so now what we understand from here, if the negative number is only 1, if grid contains only one nahi, if the grid contains negative number, odd negative numbers में क्या होगा ना कि हम एक नंबर तो ऐसा लास्ट में बच ही जाएगा जिसको वी कैन नॉट मेक द पॉजिटिव. वाई वी कैन मेक द we have to take operation like adjacent elements, two adjacent element, and make them positive. Okay, if one number is negative and another is positive, so we can not make both as a positive. Okay, both as positive. So this is the problem here in odd negative numbers. But if the negative numbers is even, okay, let's look here, look in this example test case. Okay, if the negative number is even. Okay, so firstly find the sum starting. The sum is 2, 3. I am not counting the negative. Okay, I am counting the absolute value of the numbers. Okay, 2 + 3 is 5 and 5 + 2 is 7 and 7 + 1 is 8. So but the total sum is currently with minus number is 2 + 3 is -5 and -5 + 2 + 3 is 2 + 1 is 3 and -5 + 3 is -2. So initially the sum is -2, but if we apply the operation, like we choose this adjacent element and we apply the operation like make them as positive. Okay, so now we find the number, now we find the sum. Now sum becomes maximum sum. How sum becomes maximum? We apply the operations, and after applying operation, 2 + 3 is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 8. So maximum sum is 8. Okay, here maximum sum is 8. How? Now here all the numbers becomes positive. Why? Because the negative numbers is negative numbers is even. Okay, so even negative numbers we can make all of them as positive because we choose as a pair. Okay, if the number is if the whole negative number is in this grid, if the total negative number is even numbers, okay, even numbers, then we can make all of them as positive. But if in a grid the negative numbers, count of negative numbers is odd numbers, odd, then we cannot make all of them positive. In last there is remaining of one number, मीन्स लास्ट में एक नंबर आपको ऐसा बच ही जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव नंबर होगा. तो हम क्या करें, हम यहाँ पर एक ग्रीडी ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं कि हम लास्ट में जो नंबर है ना, जो नंबर निगेटिव बचा जाएगा, वो निगेटिव नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर पे हो, जो मिनिमम नंबर है ना ग्रिड में, उसके ऊपर निगेटिव नंबर आए ताकि हमें सम जो है वो मैक्सिमम सम मिल पाए.
तो हम बस क्या करेंगे, अप्रोच बहुत ही सीधी है हमारी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लूप चलाएंगे, 2 फॉर लूप एग्जीक्यूट करेंगे, उसके अंदर हम चेक कर लेंगे काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर्स कितने हैं, ठीक है। इफ़ काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज ऑड तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम नंबर निकाल लेंगे, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे हम टोटल सम से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और टोटल सम जो हम निकालेंगे इट मस्ट बी द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ होल द नंबर्स इन द ग्रिड। ओके, सिमिलर फॉर दिस, अगर इवन नंबर आया तो इवन नंबर में जो हमने सम निकाला वो एज इट इज़ हमें रिटर्न कर देना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एज अ नंबर ऐसा कोई नंबर नहीं बचेगा जो नेगेटिव होगा, क्योंकि हम जो सम निकालेंगे वो हम सम निकालेंगे कैसे, सारे नंबर्स को एब्सोल्यूट मार करके सम निकालेंगे, ठीक है। बट इन ऑड we cannot return the absolute sum, whole absolute sum. We have to subtract from the smallest number. Okay, firstly we add all the numbers. Okay, हम क्या करेंगे, इन ऑड में सबसे सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे, एब्सोल्यूट सम निकाल लेंगे। ओके, आफ्टर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट सम वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द मिनिमम नंबर से हम क्या करेंगे, एस माइनस जो हमारा मिनिमम नंबर होगा उससे हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने उसे ऐड कर लिया था। और फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से उसे हमें एक बार और माइनस करना है, क्यों, क्योंकि एक बार तो हमने ऐड कर लिया था उसको, और एक बार हमें एज अ निगेटिव भी वो मार्क, इसलिए और हमें एक बार हटाना है, तो उसको 2 बार हमें माइनस करना होगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द अप्रोच इज़ वेरी ईजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, लेट्स मूव ऑन द कोडिंग पार्ट। ओके, मैं कोड करके दिखाती हूँ, ठीक है, आपको काफ़ी ईजी है क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इनिशियलाइज द लेंथ। ओके, सबसे पहले लेंथ इनिशियलाइज कर लेती हूँ, मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ओके, इंट एन इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 0 कॉलम की लेंथ, ओके, कॉलम लेंथ, ओके, एंड लॉन्ग एक सम नाम का वेरिएबल स्टोर कर लेंगे, एंड एक हम क्या लेंगे, मिनिमम नंबर जो हमें फाइंड करना है वो निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमारा ऑड नंबर्स हुए तो हमें वहाँ पे मिन नंबर से माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू स्टोर कर लेंगे इसमें फ़िलहाल के लिए, और क्या करना है, और इंट काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ये क्या स्टोर हो रहेगा, इट विल स्टोर द काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अब क्या करना, एडिट करेंगे फॉर लूप पर, ओके, फॉर j = 0 के लेंथ 9, ओके, j ++, ओके, एंड हम फाइंड निकाल लेंगे नम मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j, और इसको हम निकाल लेंगे, इसका हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे, मैथ डॉट एप्स। ओके, और क्या करेंगे, इफ़ जो हमारा मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j अगर लेस देन 0 तो हम क्या कर देंगे, काउंट ऑफ, एक मिनट, क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे, हमें एक नेगेटिव नंबर मिल गया, एंड सम में क्या करेंगे, प्लस इक्वल्स टू नम कर देंगे, एंड मिनिमम नंबर को भी हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। मैथ डॉट मिन ऑफ मिनिमम कॉमा नम, ओके, एंड चेक कर लेंगे इफ़ जो हमारा काउंट है वो मॉडुलो ऑफ 2 = 0, मतलब हमारे पास इवन नंबर्स हैं किसके जो हमारे पास निगेटिव नंबर्स आए हैं, निगेटिव नंबर्स आर इवन, ओके। तो हमें क्या करना है, जो हमारा सम आता है एज इट इज़ रिटर्न कर देना पूरा एब्सोल्यूट सम। लेकिन अगर हमारा ऑड है निगेटिव नंबर्स तो उसमें से हमें स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम सम, ओके। पहले हमें उसे हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने ऐड कर लिया है, किसको ऐड कर लिया है, उस नंबर को हमने ले लिया है, तो हमें उसे पहले तो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, मिन नम को। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार और करना पड़ेगा, किस लिए, सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम सम। एक बार तो हमने ऐड कर लिया था, इसीलिए सब्ट्रैक्ट करो। और दूसरा क्या था, दूसरी बार क्यों कर रहे हैं, एक मिनट, बहुत हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। दूसरी बार क्यों कर रहे हैं, दूसरी बार इसलिए करेंगे, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट
बिकॉज इट इज़ निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर है इसीलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हम रिटर्न कर देंगे बाद में, रिटर्न। ओके रन करते हैं। सब्ट्रैक्ट कर, सॉरी सबमिट कर दो। ओके सबमिटेड हो जाना चाहिए। ओके सबमिटेड। ओके आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड द अप्रोच विच आई टेल यू। ओके काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।